Hello there, a very warm welcome to your Environmental Studies class, children. Here I am, your learning buddy Aprajita with your Environmental Studies Class 4 Acknowledge Series Amit Publishing House. So, children, are you ready for a new chapter? Yes. Here we start with chapter number 9 today. And the chapter is Teeth, Beaks, and claws. टीथ एज यू ऑल नो, आप सबको पता है, आपके भी टीथ है और टीथ के बारे में पढ़ेंगे. और बीक्स किसके होते हैं? बीक, बर्ड्स हैव बीक्स. और claws, the claws which the animals have. So we'll just read about all these things in this chapter today, children. So here we start. Teeth. Our teeth are very important for us. हमारे teeth बहुत important है हमारे लिए. क्यों important है? They give shape to our face and help us to chew our food. एक तो हमारे face को shape मिलती है. teeth है, इसी वजह से हमारे face का shape भी आता है. और ये teeth हमें food chew करने में भी help करते हैं, खाने को चबाने. The teeth ground the food to a paste so that we can swallow it easily. इसको ग्राइंड करती है फूड को. टीथ क्या करता है? वो ग्राइंड करने का और एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करता है उसको, जिससे कि हमें वो खाना इजीली स्वॉलो हम कर सकें. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. यस, दांत जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्या? साफ बोलने में, जिससे कि हमारी जो क्लैरिटी इन स्पीच होती है वो भी टीथ से ही आती है. People have different number of teeth at different times of their lives. और जो टीथ का नंबर है ना, कितने, हाउ मेनी टीथ्स डू यू हैव, अगर कोई पूछे तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ आवर लाइफ्स. नाउ सी, दिस इज अ बेबी हियर. When the baby grows, the teeth here, the baby doesn't has teeth. अब थोड़ा बड़ा होता है बेबी, उसके टीथ निकलने शुरू होते हैं. फिर उसके बाद जब वो टीथ गिरने भी शुरू होते हैं. And after that, at the age when people grow old, there the teeth start falling down. Again, the old person becomes like the baby. बेबी के भी नहीं होते, जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके भी टीथ नहीं होते हैं. ऐसा ही है ना? Yes. So now milk teeth and permanent teeth. ये क्या होता है? मिल्क टीथ कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? Please very carefully read along with me. A newborn baby has no visible teeth. अब जो newborn baby होता है उसके teeth तो दिखाई नहीं देते हैं. The first teeth that appear are known as milk teeth. जो पहला teeth दिखता है baby, newly born baby का, उसे milk teeth कहा जाता है. दूध के दांत बोलते हैं ना. By the time the children are around 6 years of age, they have a full set of 20 milk teeth. ये जो दूध के दांत होते हैं, milk teeth होते हैं, by the time of they are of 6 years of age, तब तक में ये 20 teeth हो जाते हैं, milk teeth. These are temporary teeth. ये permanent नहीं होते हैं, क्योंकि गिरते भी. Between the ages of 6 and 12 years, milk teeth fall out one by one and are replaced by permanent teeth. Now these milk teeth जो 20 in number होते हैं, ये 6 to 12 years की एज के बीच में ये गिरने भी शुरू होते हैं. One by one they fall down और उनकी जगह पे जो teeth निकलते हैं उन्हें कहते हैं permanent teeth. By the time you are around 13 years, you will have 28 permanent teeth. 28 permanent teeth होते हैं जब तक कि आप कितने years के हो जाते हैं? Around 13 years, तब तक में 28 permanent teeth निकल आते हैं. And 4 more are added to these 28 much later. और बहुत टाइम बाद इन 28 teeth में 4 teeth और add हो जाते हैं. Okay? Those 4 are known as wisdom teeth. क्या teeth बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं wisdom teeth. And हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अक्कल दाढ़.
तो 28 and 4 comes to 32. It becomes 32. जिसके चारों विजडम टीथ एक साथ आ जाते हैं और 28 में एड ऑन हो जाते हैं तो 32 हो जाते हैं टोटल. Many people they don't have all 4 wisdom teeth. पूरे 4 wisdom teeth एक साथ नहीं आते हैं. It varies. Now, activity. How many teeth do you have? आपके कितने teeth हैं? तो आप ही काउंट करके लिखेंगे अपने आप. How many teeth you have? Have you lost any teeth recently? अभी recently कोई teeth गिरा है आपका? Write down 2 words that describe teeth. ऐसे 2 words कोई लिखिए जो कि teeth को describe करे. Chew food. अगर बोला तो chew food मतलब किससे chew करते हैं हम? Teeth से करते हैं. Ask your mother or father whether they have all their wisdom teeth. अपने mother father से पूछिए कि आपके चारों wisdom teeth निकले हैं. They'll tell you. Okay? Now, what is tooth made up of? ये tooth जो है हमारे, ये teeth जो है किस चीज के बने? Teeth are hard and strong structures fixed in the jaw. ये जो हमारी jaw है इसमें एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स होता है. Only a small portion of the tooth can be seen and the rest is inside the gums. जो हमारे gums है उसके अंदर बाकी का पोर्शन होता है और ऊपर थोड़ा सा विजिबल होता है. The white part that can be seen is known as the crown. Now children, look carefully. ये जो white part हमें ऊपर दिखता है, ये जो white portion हमें ऊपर दिख रहा है, this is known as the crown. इसे हम कहते हैं crown. The lower part that cannot be seen, the lower part that cannot be seen is known as the root. और ये जो lower part है, जो gums के अंदर रहता है, इसे कहते हैं root. So the top part which is seen is known as the crown and the lower part which cannot be seen is known as the root. There are 3 layers that make up a tooth. एक tooth में 3 layers होते हैं. And what are they? The outer hard enamel. जो outer portion होता है, hard portion, उसको enamel बोलते हैं. Outer hard enamel. Inner dentine. Inner dentine. उसके नीचे वाला layer होता है dentine. And the innermost pulp, बिल्कुल अंदर वाला जो होता है, the third layer is the pulp. The pulp has nerves that help us feel the pressure while chewing. जब हम chew करते हैं तो वो जो pulp है उसमें जो nerves है उस पे pressure पड़ता है. We feel the pressure there. There are 4 kinds of teeth. Now teeth also layer, तो 3 kinds of layer होता है एक teeth में. और जो teeth होते हैं इसके कितने kinds के teeth होते हैं? 4 kinds of teeth. They are canines, molars, premolars and incisors. Canines, the sharpest one. The molars, premolars and incisors. Now, molars are broad and help to grind the food. एक बार और देखिए मोलर्स कैसे है. देखिए ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े हैं ना, और ये हमें हेल्प करते हैं फूड च्यू करने. Premolars are flat and broad. They help to crush the food. Again look at this. Premolars ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं, इतने ज्यादा ब्रॉड नहीं होते, थोड़े से ब्रॉड होते हैं. और ये premolars क्या हेल्प करते हैं हमें? They help to crush the food. Incisors are sharp and flat. They help us to bite, cut and hold the food. ये जो incisors हैं थोड़े sharp होते हैं और इनसे क्या होता है? ये bite, tear करने में भी help करते हैं. Tear करने में तो canines help करते हैं. See, canines help in tearing the food. They are sharp and pointed. ये बिल्कुल sharp और pointed होते हैं. बिल्कुल यहाँ होते हैं आपके, और they are very sharp and pointed और food को tear करने में help करते हैं. Molars chew करने में help करते हैं. Then premolars grind करने में help करते हैं. Then premolars थोड़े flat और broad होते हैं और वो आपको crush करने में help करते हैं. They help to crush the
food, and the incisors are sharp and flat. They help us to bite, cut, and hold the food. Okay? Now, care of teeth. Teeth की care कैसे करें? Our teeth are the hardest part of our body. पूरी body में हमारे सबसे hardest part जो है वो है teeth. We use them to bite, tear and chew food. So they have to be very strong. अब फूड को बाइट भी करते हैं, टीयर भी करते हैं, च्यू भी करते हैं इस टीथ से, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. If we do not take care of our teeth, they will decay and fall off. और अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे अच्छे से, तो वो क्या होगा? डीके हो जाएंगे, सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं एंड फिर वो गिर जाते हैं. If a permanent tooth falls, it will not grow again. So children, take due care of your teeth. आपके जो permanent teeth है, अगर एक बार गिर गए तो वो और फिर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि मिल्क टीथ गिरने के बाद निकलते हैं वो permanent teeth, और permanent teeth गिरने के बाद कोई teeth नहीं आता. We eat something or the other throughout the day. पूरे दिन में हम कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं. A thin layer of food gets deposited on our teeth. If we do not rinse our mouth after eating food, the layer becomes thick and our teeth begin to look yellow. अभी क्या होता है, हम पूरे दिन में कुछ न कुछ खाते रहते हैं. हर खाने के बाद अगर हम अपना माउथ रिंस नहीं करेंगे, माउथ रिंस करना मतलब जब जो हम कुल्ला करते हैं, जाके माउथ को वॉश करते हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लेयर बढ़ती जाएगी, फूड की लेयर बढ़ती जाएगी और वो थिक हो जाएगी और हमारे जो दांत है वो येलो दिखने लगे. दिस येलो लेयर इज कॉल्ड प्लाक. और इस येलो लेयर को क्या बोलते हैं? ये जो थिक येलो लेयर जो जम जाती है हमारे दांतों के ऊपर, इसे कहते हैं प्लाक. Bits of food which stick to the teeth can cause tiny germs called cavity to grow in the mouth. और कुछ खाना, छोटे छोटे पीसेस जो स्टिक कर जाते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, वो छोटे छोटे जर्म्स पैदा करते हैं जिससे कि हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है एंड वो कैविटी बढ़ती चली जाती है और दांत को खराब करती है. These germs break down the food particles. This produces an acid. The acid makes a hole or a cavity in the tooth. अब क्या होता है, ये जो जर्म्स होते हैं, जो जर्म्स डेवलप होते हैं छोटे छोटे, ये खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे कि होल होना शुरू हो जाता है हमारे दांतों या कैविटी होती है, उसको कैविटी हो जाती है. This causes toothache. Up toothache. See children, this spelling is wrong here. Toothache. T-O-O-T-H-A-C-H-E. Okay? Toothache. Now, अब इससे क्या होता है, जब कैविटी होती है और होल होना शुरू हो जाता है तो हमारे दांतों में दर्द होना शुरू होता है. Now, dental care. How this dental care is taken. Follow these healthy habits to keep your teeth strong. अब अपने teeth को strong रखने के लिए आपको कुछ habits होने बहुत जरूरी है. Healthy habits, you have to develop that. Brush your teeth at least twice daily. In the morning when you get up, brush your teeth first and then have something. And at the night when you are going to sleep, before going to sleep, just brush your teeth and then go to sleep. What else? Rinse your mouth after every meal. हर meal के बाद अपने mouth को rinse कीजिए. This will remove the food particles that are stuck in the teeth. Brush your teeth in and up and down motion. Brush your teeth in up and down motion. Okay, up and down motion में brush करना चाहिए, as shown in the picture. See, up, then down, here down, sideways, backwards. This is the way to brush your teeth. Eat plenty of raw
fruits and vegetables. कच्ची फल सब्जियां खाना बहुत जरूरी है. They give good exercise to the teeth. Okay? जब आप फल सब्जी को काट के च्यू करके खाएंगे तो उससे आपके टीथ की एक्सरसाइज होगी. Visit a dentist regularly. You should visit a dentist regularly so that the dentist sees your status of your teeth and he or she can advise you what you have to do to take care of the teeth. Fine, and brush your teeth gently. बहुत तेज तेज ब्रश नहीं करना चाहिए. You should brush your teeth very gently. Animals and their teeth. अभी तो हमने ह्यूमन बीइंग्स के टीथ के बारे में पढ़ा देखा. Now we come to the animals and their teeth. We have seen how we eat with the help of our teeth. Let's see what helps animals and birds to hold, cut, bite and eat their food. अब हम देखेंगे कि ये एनिमल्स और बर्ड्स को ये टीथ क्या चीज हेल्प करती है उनको फूड को कट, होल्ड और बाइट करने. ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो टीथ है. Now, do you know what helps the following to eat? अब mammals को क्या चीज हेल्प करती है खाने में? किस चीज से खाते हैं वो? Teeth. Teeth helps them to eat. Mammals. Now birds. Birds. How do birds eat? उनके तो teeth नहीं होते हैं birds के. So the beak helps them. जो चोंच होती है वो हेल्प करती है उन्हें खाने. Okay? Most mammals have teeth similar to ours. ज़्यादातर mammals जो होते हैं उनके teeth जो होते हैं हमारे जैसे हैं. Teeth of animals differ depending upon the foods they eat. और जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके दांत भी होते हैं. Meat eaters, carnivores, जिनको carnivores बोलते हैं. हुआ carnivores, those who eat meat. Meat eaters have sharp teeth. अब जो मीट ईटर्स होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं जो एनिमल्स के में मीट ईटर्स होते हैं. प्लांट ईटर्स जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं हर्बीवोर्स दे हैव फ्लैट टीथ. उनके फ्लैट टीथ होते हैं क्योंकि उनको कुछ टीयर नहीं करना होता है. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट लाइक ह्यूमंस हैव शार्प टीथ इन फ्रंट एंड फ्लैट टीथ एट द बैक. अब ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं उनके कैसे टीथ होते हैं? शार्प टीथ. तो आगे की तरफ शार्प टीथ होते हैं उन एनिमल्स के और बैक साइड में ब्रॉड टीथ, फ्लैट टीथ होते हैं टू च्यू. नाउ सी herbivores, those who eat only plants. So इनके flat, they have flat teeth. This is a goat. And carnivores, lion, tiger. They have sharp teeth. Look at the sharp teeth. Front में कितने sharp teeth है क्योंकि उसको hold भी करना होता है, tear भी करना होता है अपने brain. Omnivores have a combination of flat and sharp teeth. Monkeys, इनके sharp teeth भी होते हैं और flat teeth भी. Okay? So now, name an animal that have very sharp teeth. Lion. Lion has very sharp teeth. Lion. Name two herbivores that have flat teeth. Herbivores जो plants, केवल plants खाते हैं. तो वो कौन से हैं? कौन है? Cow, goat. They are herbivores and they have flat teeth. Beaks and claws of birds. अब birds की beaks और claws के बारे में बात करेंगे. Different birds have different types of beaks and claws. अलग अलग तरह के birds के उनके beaks और claws जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं. The shape of a bird's beak and claws depends on the food it eats. इनके beaks और claws भी उसी पे डिपेंड करते हैं जिस तरह का ये खाना खाते हैं. Beaks. Now we come to the beaks. अब beaks के बारे में पढ़ते हैं. Birds do not have teeth. We all know that birds don't have any teeth.
they have a beak. चोंच होती है. The beaks are also called bills. Beaks को क्या बोलते हैं? Bills. A bird uses its beak to feed itself. Bird क्या use करती है? अपनी beak use करती है खाना खाने. Thus, the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh. Okay? जो birds nuts खाती हैं, उनकी beak अलग तरीके की होती है, और जो birds flesh खाते हैं, उनकी beak different type की होती है. क्योंकि birds में भी तो nuts खाने वाले और flesh खाने वाले होते हैं. Types of beaks. Now we come to the types of beaks. Short, hard and horny beaks. Short beaks होते हैं, hard beaks होते हैं, horny beaks. Birds like sparrows, pigeons, doves and hens mostly eat seeds and grains. आपने देखा होगा pigeons दाना खाती हैं, जो hen होती है वो भी ऐसी grains खाती है. They have short, hard and horny beaks to break their food before eating. इनके कैसे होते हैं? छोटे छोटे beaks होते हैं, hard होते हैं और horny होते हैं, sharp भी होते हैं, जिससे कि वो अपने फूड को तोड़ती है खाने से पहले. फाइन. ग्रेन्स को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद खाते हैं. सो दे हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. नाउ हुक्ड बीक्स. हुक देखा आपने? ऐसा मुड़ा हुआ होता है. हुक की तरह बीक्स किसके? Birds like parrots which need to crack open nuts and seeds from fruits have a pointed and hooked beak. Parrots, you have seen parrots? वो क्या खाते हैं? नट्स खाते हैं, और उस नट को पहले वो तोड़ते हैं. They have to crack open the nut. और seeds from fruit के seeds जो होते हैं उसको भी open करना होता है, इसलिए उनके pointed और hooked beaks हैं. Flesh-eating birds like eagles, kites, owls and vulture. Eagle, vulture, owl and kite. See, also have very strong pointed and hooked beaks to pierce and tear the flesh. You all know vultures dead animals को खाते हैं, तो उनको टीयर करने के लिए पॉइंटेड चाहिए होता है, हुक्ड चाहिए होता है, जिससे कि फंसा के उसे फिर वो टीयर करते हैं अपने फ्लैश को. तो these animals who are flesh-eating birds, these birds who are flesh-eating birds, they also have a strong pointed and hooked beak. Fine. अब पैरट्स और इनके कैसे बीक होते हैं? पैरट्स के जिनको नट्स ओपन करना होता है, उनके होते हैं पॉइंटेड एंड हुक्ड. उनके भी पॉइंटेड और हुक्ड बीक्स होते हैं. Now broad and flat beak. Now we come to the next type of beak, broad and flat beak. Birds like ducks and swans dig up the mud underwater in search of their food. अभी जो birds हैं, ducks और swans, ये क्या करती है? पानी के नीचे का जो मिट्टी होती है जमीन, उसमें वो खोदती है और उसमें से अपना खाना निकालती है. They have flat and broad beaks which have strainers all along these edge. Edge पे एक strainer छन्नी सी लगी होती है. When they squeeze the beaks, water and mud go out through these strainers and the food remains inside the mouth. अब क्या करते हैं ये, जब ये डक्स और स्वॉन्स ये मड खोद के अंदर से जब अपना फूड निकालते हैं, तो उसके साथ मिट्टी और पानी दोनों आ जाता है, बिकॉज द मड इज अंडर द वाटर. सो अ स्ट्रेनर इज देयर इन द एज ऑफ देयर बीक. एक छन्नी लगी होती है. स्ट्रेनर किसे कहते हैं? छन्नी. और जब ये अपने बीक को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें से मड और वाटर निकल जाता है, और जो उनका फूड होता है वो उनके बीक के अंदर ही रह जाता है. So, see how this nature has given such a beautiful thing to them. Already there is a strainer in their beak. Beak में already छन्नी लगी हुई है उनकी. है ना miracle? Yes. So, long beak. Now we come to the long beak. अभी हमने broad and flat beak देखा. Now we will read about the long beak. Woodpeckers peck off bark from trees
and make deep holes to look for insects. अब जो woodpeckers है, तो देखा है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं woodpeckers को? कटफोड़वा। वो लकड़ी को तोड़ता है अपनी बीक से। Now it pecks off barks from tree, इसके bark को निकालता है and make deep holes to look for insects, और उसके bark उसमें छेद बनाता है लकड़ी के स्टेम में, मोटे से तने में, और उसमें से इंसेक्ट्स निकाल के खाते हैं। So they have a long and strong beak to tap the wood of the trees. ट्री के वुड को टैप करने के लिए उसका बीक कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होता है। The hoopoe also has a long thin beak to pull out insects from holes in the ground. एक hoopoe एक बर्ड है, उसकी भी लॉन्ग सी बीक होती है, थिन बीक, पतली सी बीक होती है, जिससे कि वो ग्राउंड में होल बनाता है और उसमें से इंसेक्ट्स निकालता है। Fish eating birds like storks, herons and kingfishers, stork, heron, kingfisher also have long beaks which help them to catch fish easily. वो क्या करते हैं? अपने लॉन्ग लंबे से बीक को पानी के अंदर ऐसे डालते हैं और वहां से फिश को निकालते हैं। So, how many types of beaks we have read? Different kinds of beaks. Beaks, multi-purpose tool. How a beak is a multi-purpose tool. एक चोंच जो है बर्ड की, multi-purpose tool है। Birds use their beaks to do many things. To pick grains, tear flesh, peck and fight. देखिए कितने सारे यूजेस हैं इनके बीक। वो ग्रेन्स उठाने में भी हेल्प करते हैं, उनको टीयर करने में भी, किसी फ्लैश को टीयर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। देन टू पेक, वुडपेकर पेक करता है बाक में, एंड फाइट, वो लड़ते भी हैं तो अपनी बीक से लड़ते हैं। टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फेदर्स, आपने अगर देखा हो बर्ड्स को कभी, तो यू मस्ट हैव सीन वो बीक से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग, और इस प्रोसेस को प्रीनिंग बोलते हैं। टू फीड देयर यंग वंस, वो खाना लाती हैं अपने बीक में और अपने यंग वंस के मुंह में डालती हैं। टू मेक नेस्ट, यस, they make their nest with the help of their beaks. Birds carry grass, twigs and leaves in their beak. Then they use these to make a nest using their beak as a tool. So their beak is a very helpful tool for them. Toes and claws, जो birds के claws होते हैं, पंजे। All birds have toes, and उनके toes भी होते हैं, claws भी होते हैं on their feet. उनकी feet में toes भी है और claws भी। They use them to hold on to things, swim and fly. और ये जो toes and claws है, ये किस चीज में हेल्प करता है इनको? It helps to hold, चीजों को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, swim करने में हेल्प करता है और fly करने में भी हेल्प करता है। It also helps them to catch food and protect themselves from enemies. Food पकड़ने में हेल्प करता है और enemies से भी बचाता है। The toes and claws of birds are modified according to food habits of each bird. इनके toes और claws जो हैं वो modify होते हैं, अलग अलग birds के अलग अलग तरह के होते हैं according to their food habits, और अलग अलग birds के जो अलग अलग food habits है उसके according उनके toes and claws होते हैं। Now, flesh-eating birds. Flesh-eating birds like eagles, hawks and kites have strong and sharp claws called talons. ये जो eagles हैं, hawks हैं, kites हैं, ये सब flesh-eating birds हैं। इनके कैसे होते हैं? Strong and sharp होते हैं claws, और कहते हैं talons. It helps them to catch and hold on their prey firmly. वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ते हैं और उसको लेके फ्लाई करते हैं। That's why they have very sharp and strong claws. Perching birds. Birds like sparrows and crows have 3 long toes in front and 1 at the back. 3 लंबे लंबे toes आगे होते हैं उनके और एक बैक में। These help them to hold the branch of the tree firmly. ब्रांच पे बैठते हैं ना, टहनी पे बैठते हैं जब ये जाके ट्री की, तो
उसको होल्ड करने के लिए, ब्रांच को होल्ड करने के लिए 3 आगे होते हैं इनके टोज और एक बैक साइड में। The grip is so strong that they do not fall off even while asleep. जब वो सो भी जाते हैं बैठे बैठे उस ब्रांच पे, तो भी वो गिरते नहीं है, वो इतना फर्मली उसको पकड़ते हैं। This type of gripping the branches is called perching. इस तरह के जो ब्रांच को ग्रिप करके बैठते हैं लोग, इसको कहते हैं perching. Swimming birds. Now we come to the swimming birds. Swimming birds like ducks and swans have webbed feet. Webbed feet you must have seen. उनके टोज के बीच में एक जाला सा बना होता है, वेब, जैसे स्पाइडर का वेब होता है वैसा। They have 3 toes in front and 1 at back. 3 आगे होते हैं और एक पीछे होता है। The 3 front toes are joined by flaps of skin called webs. उनके बीच में यहाँ पे स्किन लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं वेब। These help them to use their feet as oars while swimming in water. आपने देखा है जब वाटर में हम रोइंग करते हैं तो चप्पू देखा है, चप्पू बना हुआ होता है जिससे कि वाटर को पीछे की तरफ धकेला जाता है एंड जो बोट है वो आगे जाती है। इसी दिस द सेम थिंग इज देयर इन देयर फीट। अब वे इनके जो टोज होते हैं, फ्रंट के जो टोज हैं उसके बीच में फ्लैप ऑफ स्किन लगा हुआ होता है और ये इनको हेल्प करता है स्विमिंग। स्क्रैचिंग बर्ड्स, ओके, birds like hens have strong legs and hard claws. जो hen होती है उसके बहुत strong legs होते हैं और जो claws होते हैं वो बहुत hard होते हैं। They have 3 toes in front and a short one at the back. 3 आगे होते हैं toes और एक छोटा सा पीछे होता है। This helps them to scratch the ground to find seeds and insects. अब वो hen क्या करती है, ग्राउंड को स्क्रैच करती है, उसमें से सीड्स और इंसेक्ट्स निकाल के खाती है। सो दिस टो हेल्प्स देम टू स्क्रैच। ये जो क्लॉज होते हैं इनके, ये स्क्रैच, ग्राउंड को स्क्रैच करने में हेल्प करते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स. Climbing birds like woodpeckers and parrots have 2 toes which point upwards and 2 which point downwards. अब जो क्लाइंबिंग बर्ड्स है लाइक वुडपेकर और पैरट्स जो ट्री पे चढ़ते हैं, इनके क्या होते हैं 2 toes which point upwards और 2 downwards, like this, upwards and downwards, right? These help them to climb and cling to the trees. क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं और पकड़े रखने में उसको हेल्प करते हैं। Wading birds. Now, who are wading birds? Wading birds like cranes and herons have long legs with spread out toes. अब ये जो long legs होते हैं क्या हेल्प करते हैं? Long legs and spread out toes. ये देखिए toes and claws of a crane. लंबे लंबे पैर होते हैं इनके और toes जो है वो ऐसे फैले हुए हैं। These help them to wade through muddy water without sinking and catch fish. ये muddy water में भी इनके पैर धंसते नहीं है। जो चौड़े से पंजे होते हैं इनके टोज, स्प्रेड आउट टोज होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि ये बिना सिंक किए हुए मडी वाटर में ये फिश पकड़ते हैं। ओके, नाउ सी टोज एंड क्लॉज ऑफ एन ईगल. ईगल के ऐसे टोज एंड क्लॉज होते हैं। टोज एंड क्लॉज ऑफ अ क्रो, देखिए 3 आगे और एक पीछे। Toes and claws of a crane, 3 spreaded like this and spreaded toes और लंबे legs. Toes and claws of a hen, okay. 2 आगे 2 पीछे की तरफ, 3 आगे और एक छोटा सा बैक साइड में। Fine. So now, how was the lesson, children? मजा आया चैप्टर पढ़ के? कितने तरह के हमने बर्ड्स के बीक्स के बारे में पढ़ा, उनके टोज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ा। मेनी थिंग्स वर वेरी न्यू टू यू। आई होप आपने पहले कभी नहीं सुना होगा उन चीजों के बारे में। सो नाउ लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स, टेस्ट योरसेल्फ व्हाट यू हैव रेड। व्हाई डू वी हैव टीथ?
teeth क्यों होते हैं हमारे? We have teeth to chew our food. Yes, the teeth helps us to chew our food. Name the 4 kinds of teeth. Okay? अभी याद है आपको कौन कौन से teeth थे? Let's recall. Canine. Okay? Canine. Premolar. Then molar and incisor. Okay? What is a plaque? A plaque is the yellow layer which collects on the teeth if we don't rinse our mouth after every meal. Food particles which keep on collecting on our teeth, and it develops a thick yellow layer that is known as a plaque. What is a cavity? If we don't rinse our mouth after every meal, the food particles, they stick on the teeth, and slowly what happens? They develop the germs. The germs develop there, which produce acid, which breaks that food particles and produce acid, and they form the cavity in our tooth. That acid forms the cavity, the hole in our tooth, which is known as the cavity. Now children, take the correct option. These birds have webbed feet. अभी हमने पढ़ा webbed feet किसके होते हैं, जिसके feet के बीच में skin की layer होती है. So children, this question has to be changed here. The question is, webbed feet helps the birds in. You have to change this question. The question is, webbed feet helps the birds in. In what? Webbed feet क्या help करते हैं birds को? In swimming, wading or perching. They help them in swimming. Okay? Now children, owls and eagles have these beaks. Owls and eagles के कैसे beak होते हैं? Hooked, chisel-shaped strainer. Owls and eagles are flesh eaters, so they have hooked beaks. Talons are found in these birds. Grasping, scratching, swimming. Okay children, now again number 3. Here you have to make a change in the question. Talons help in. What does talons do? Talons जिनमें होते हैं, जिन birds में, उनको पकड़ने में help करते हैं. Okay? In grasping, scratching or swimming. In grasping. A hoopoe has a slender beak, curved beak, short beak. Hoopoe की slender beak होती है, thin beak होती है. Slender beak. Which of these is true about wading birds? Wading birds, इनमें से क्या चीज होता है wading bird में? They can walk through water. They cannot walk through water. They have short legs. None of these. A wading bird can walk through water. It has long, thin legs. So, take this one. Okay, children? Now, let's move ahead. Give reasons for the following. Ducks and swans have strainers all along the edges of their beaks. Ducks or swans के beak के edge पे एक strainer लगा होता है. Now, why? The strainer helps the ducks, as the ducks and swans, they just take their food from underwater, the mud under the water, and when they take out their food from there,
the mud and water both comes along with the food. When they press their beak, the strainer which is there at the edge of their beak, it helps the mud and the water to strain out, to come out, and only the food is left behind in the beak. Flesh-eating birds have talons. The flesh-eating birds have talons to hold the prey so that they can hold and tear it out. Ducks and swans have webbed feet. As the ducks and swans always they keep on swimming in the water, so these webbed feet helps them to swim in the water. Now, write T for true and F for false. Birds have teeth to eat. क्या birds के teeth होते हैं खाने के लिए? उनके पास teeth होते हैं? No, they don't have. So this is false. Write F. Owls have a shredder beak. No, they have pointed and hooked beak. So this is false. Birds use their beak to clean and smoothen their feathers. Yes, this is true. T. Birds use their claws to climb and cling the tree to trees. Yes, there are some birds who use their claws to climb and cling the trees. Yes, true. Hawks have sharp claws called talons. Yes, to grasp, to hold it, to hold and carry their flesh. So yes, hawks have a sharp claws called talons. True. Now what's next? Answer the following questions. What do birds use their beaks for? The birds use their beaks in many ways. Different birds have different kinds of beaks and they use their beaks according to their food habits. Some birds have hooked and pointed beaks with which they tear the flesh, and then other birds they have the beaks with which they just peck the wood of the tree. So they have many different kinds of beaks according to their food habits. And these beaks, they help them to eat their food. What do birds use their claws for? Some birds use their claws for swimming, some birds use their claws for holding their prey, and some birds use their claws for standing in water so that they don't sink in the water. Why do the beaks of birds differ in shape and size? The beaks of the bird, as I told you, differ in shape and size according to the food habits, according to the food which they eat. What does a woodpecker use its beak for? The woodpecker uses its beak to peck the wood of the tree and make a hole so that it can catch the insect from inside the bark of the tree. Okay? Now we come to the activities, children. Why are the beaks, feathers, feet, etc. of different birds different in color, shape and size? This you can discuss with your friends. अभी आपने पढ़ा इस लेसन में कि अलग-अलग birds के अलग-अलग type के beaks, feathers, feet होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी पढ़ा आपने. So have a group discussion in your class. If you were allowed to be a bird, which bird would you like to become? Tell the class the name of the bird and why you would like to be that bird. Now, when you sit along with your friends, जब आप बैठे होते हैं तो have a discussion कि अगर आपको bird बनने का chance मिले तो कौन सा bird बनना चाहिए? Ask your friend, तुम क्या बनना चाहोगे? Then your friend will ask you, what would you like to become? बताइए आपको जो bird बनना है, जो इच्छा है आपकी जिस bird की, वो बताइए और ये भी बताइए कि क्यों बनना है आपको वो bird. Find out the food habits of any 5 birds. Now, this is your homework, children. किसी भी 5 birds के food habits को पता कीजिए. Write down how they use their beaks and claws to eat food. और वो 5 birds के बारे में लिखिए कि वो अपने beaks और claws को खाना खाने में कैसे use करते हैं. Make a scrapbook of pictures of birds with different kinds of beaks and claws. This is beaks. Okay? Different kinds of beaks and claws. एक scrapbook बनाइए जिसमें कि आपको
पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स पेस्ट करने हैं जिनके की अलग अलग तरह की बीक्स और क्लॉज हैं. Circle the birds which are commonly seen by you. Maybe there are many birds which you don't see. बहुत सारे birds हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं. तो उन birds को circle कीजिए अगर उनकी pictures आपको मिलती हैं. Make attractive poster on dental care. Yes, अभी dental care के बारे में पढ़ा ना, हमें कैसे अपने teeth का care करना चाहिए. तो उसका एक attractive सा poster बनाइए along with the picture and the slogan. Write down everything and make an attractive poster. Fine. So here I end this chapter and I hope you have learned a lot, many things in this chapter. So stay excited for the clamp of next video. I'll be back soon. Till then, stay happy, keep learning. Bye.